So now we would start from this slide. I think we also have done this slide, but let's start with it. Actually, we want to correct. You have recorded. This is about SPT corrections, right? SPT corrections. So you have recorded NF or N, only N is a SPT blow count that you have recorded in the field using a hammer which has an efficiency of NH. This is the hammer efficiency of the machine, SPT machine that you have used and found SPT count equals N. Now you want to know if you had used a standard SPT machine of SPT blow count equals to 60, how you would convert it to 60. If you divide this by 60, which we consider as standard energy, SPT with standard energy, you divide it with 60. So you get N60. N60 means an SPT count which a standard SPT machine of 60 energy ratio would have recorded. So by this way you have converted N into N60. How? Multiply N with the energy ratio of that machine divided by a standard energy ratio which is considered to be 60 in our case. In addition to energy correction, there are other corrections as well, like borehole correction, right? Like sampler correction and like rod length correction. If the borehole NB is the borehole diameter correction, if the borehole diameter is greater than 6 inches, you have to use NB. You have to correct your blow count. NS is the sampler correction. Sometimes if you use a liner in the SPT sampler, you need the correction. If you don't use the liner and you use the standard SPT split spool sampler, you don't need this correction. NR is the rod length correction. For rod length less than 10 meter, you require a correction, right? From where you would get this correction? These corrections you can have from this table. See this table, this first one is about energy correction. Different types of SPT machine like Donut, Safety, used in different countries have different efficiencies. The one that we use in Pakistan, we have not recorded its energy, its efficiency, right? But I suspect it will be close to 45. And if you use 45, it is conservative. NS is the sampler correction, as I said. If you use a standard sampler, you don't need a correction, but if you use a liner, you need correction. Similarly, borehole diameter correction. Up to 120 mm or 6 inches, you don't need any correction, but for oversized boreholes, you need correction. Similarly, for rod length greater than 10 meter, you don't need any correction, or less than 10 meter, you need correction. After finding the relevant correction factors from this table,
you can use this equation to find out the corrected SPT count. Another correction that is sometimes used is the overburden correction. You multiply N60 with Cn, that is an overburden correction, and you would get N61. N61 means the blow count has also been corrected for overburden pressure, because as the overburden pressure increases, the SPT count will increase. If you want to free the SPT count from the effect of the overburden, you need this overburden correction and you multiply with Cn. What is Cn? Cn is, you can obtain from this equation, 1 over effective stress, effective overburden pressure over atmospheric pressure under root. What is effective overburden pressure? It is gamma prime into Z. Z is the depth where you want to correct your SPT value. Okay. Do you have any question? If anyone has question, please ask. Okay. Let's move on. After you have done the SPT correction, you can use the standard tables to read different values. For example, you can use this table. Here is standard penetration number, which is N160. N160 means this blow count has been corrected for overburden as well. If these are the SPT counts, these are the relevant relative densities of sand. You can also find friction angle. This is one of the many equations that I have mentioned here. Again, N160 means the SPT count has been corrected for overburden pressure. Into 20 under root plus 20, you can get friction angle of the sand. Remember that finding the friction angle of the sand requires an undisturbed sample from deep in the borehole, which is not possible, right? And are very much expensive to get. So alternatively, the SPT count, which is very easy to conduct, you correlate it with the friction angle and you find the friction angle of the soil. This is another table. Here the N170s are given. When you get N170, because this table is from a book which considered 70, not 60 as standard. So we have to put it here, right? But it is very easy to convert N160 into N170. Can anybody tell me how we can convert N160 into N170? G. Can anybody say how we can convert N160 into N170? जी मिस इकरा आप बताएं। मिस इकरा आप बताएं। जी
टूरसिनीन बताए, टूरसिनीन क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। अब्दुल मुसव्विर, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अच्छा, तो ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? हाँ ना का भी जवाब नहीं दे रहा। तो रशीदीन से मैं क्वेश्चन पूछा, यस सर। तो अब हाँ ना नहीं कर रही। सर कनेक्शन का प्रॉब्लम है, बीच में बिल्कुल आवाज नहीं आती। अच्छा अच्छा, तो फिर आप कैसे फॉलो अप कर रही हैं? सर अगर फिर जब बीच में लैग हो जाए तो फिर रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। चलिए, अभी तो सुन रही है ना। आप बताएं N160 से N170 को कैसे कन्वर्ट किया जाए? सर ये मैंने सर आई डोंट नो। ये बताएं ना। अच्छा जी, देखिए बहुत आसान है, मैंने तो आपसे पहले भी कहा था। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एन, कोई और बता सकता है तो बता दे। आपके पास N160 फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आ रही है 50। अच्छा जी, और आपको चाहिए N170, कोई बता सकता है कैसे करना है? ये मैंने तो बताया था ना आप, सॉरी N170 आपको रिक्वायर्ड। N160 को एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ना, बिल्कुल इसी तरह है। ये तो कोई रॉकेट साइंस तो मैं नहीं पूछ रहा, बल्कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। N160 इज 15 N160 है, इसको मल्टीप्लाई करें विद एनर्जी रेशियो, with its energy ratio, divided by 70 which you want to get. This way you can find N170. ठीक है ना? या अगर आप डायरेक्ट N170 मालूम करना चाहें तो देखें, ये 60 जो आपके पास आ रहा है, इस 60 को हटाएं, यहाँ पे 70 रखें, ये यहाँ पे 70। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको N170 चाहिए, और मुझे क्या करना पड़ेगा? ये हो गया N। और मुझे क्या करना पड़ेगा जी? और क्या इक्वेशन के और क्या करना पड़ेगा? तो जी बताएं कोई। सर 60 को रिप्लेस करेंगे 70 के साथ। 60 को 70 पे रिप्लेस करें, ये भी आपके पास 70 आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये है हाउ यू वुड कन्वर्ट N170 into N160 into N170। अच्छा जी, ये क्ले के साथ एक कोरिलेशन है N60, यहाँ पे N160 नहीं बल्कि N60 है, लेकिन मुख्तलिफ N60 की वैल्यू दी गई है। इससे आपको पता चलता है कि आपके सब सॉइल जो है ना वो हार्ड है, वेरी स्टिफ है किस टाइप की है, और इसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए। ये एक इक्वेशन है अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ CU क्ले की मालूम करने के लिए। देखें N60 अगर आपको बोर होल डेटा से मालूम हो तो उसको इस इक्वेशन में डालें, आपको अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल भी मिल सकती है।
ये है इलास्टिक मॉड्यूलस ES के साथ कोरिलेशन है, लेकिन मुख्तलिफ टाइप ऑफ सॉइल्स हैं, इसके लिए मुख्तलिफ इक्वेशंस दी गई हैं, सबको n के साथ कोरिलेट किया गया है। मगर ये नोट करें कि ये इक्वेशन बहुत पुरानी है, इसलिए उस वक्त N55 जो है ना वो स्टैंडर्ड एनर्जी रेशियो थी, तो इसलिए इन इक्वेशन में आपको N55 इस्तेमाल करना होगा। ये सारे N55 हैं, देखें ये टेबल में लिखा हुआ है कि N वैल्यू शुड बी एस्टिमेटेड एज N55 एंड नॉट N70 और N60, N55। तो इसमें आपको N55 इस्तेमाल करना हो। कोई क्वेश्चन है यहां तक, ताकि नेक्स्ट आर्टिकल को चले जाएं? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इफ एनीवन हैज क्वेश्चन आस्क। अच्छा जी, अब आते हैं SPT से immediate settlement. How to find immediate settlement from SPT count? These are the equation, but I am gonna copy it in the paintbrush. Yes. This is the equation. You see this equation. Now look at this equation. Very simple equation. This is QA is the allowable bearing capacity. QA is the allowable bearing capacity for 25 mm settlement. If you find QA from this equation, it will give you, it is based on 25 mm of settlement. If you apply a pressure equal to QA on the foundation would settle by 25 mm. If you apply a net pressure of QA on foundation, it would settle by 25 mm or 1 inch. ये है। अभी अगर आपसे, if you are asked to find a settlement, a QA for 50 mm settlement, not 25 mm settlement, rather 50 mm settlement, definitely you would increase the pressure on the foundation so that the settlement is equal to 50 mm, because this equation is applicable for 25 mm foundation settlement, right? This would give you QA for 25 mm foundation settlement. But if you allow 50 mm foundation settlement, definitely you have to increase the allowable bearing capacity. You have to increase the applied pressure, right? So you have to multiply this by a factor, this equation by a factor, multiply by 50
divided by 25. But if you are asked here, oh, come here. If you are that find QA for 75 mm settlement, then you have to use 75. Or if it is in inches, if you are asked to find QA for 3-inch settlement, so what you would do? Can anybody answer? QA for 3-inch foundation settlement. जी जी बताए कोई? कैसे करेंगे? 3/1, 3 इंचेस बाय 1 इंच. अगर 1 इंचेस में हो तो 3/1 होगा, अगर mm में हो तो 75/25. Let's generalize this equation. Let's generalize this equation and multiply this with this factor. This factor is to convert QA from 25 mm settlement to any required settlement. Delta HI is any required settlement and delta H naught is 25 mm or 1 inch. आपको समझ आ गई है? In some other condition, this is equation number 1. In some other condition, you may need to apply equation number 2. This is the equation number 2. This is the equation number 2. Again, to generalize the case, you would multiply this equation. With this equation. Okay. So you have these two equations and you can use them to find immediate settlement. Here in this equation, 4 factors are used: F1, F2, F3 and F4. These are tabulated here for N16. These are SI units and these are FPS units. F1, 2, 3, 4 you can pick from this table. If B, which is the width of the footing, is less than F4, you would use equation number 1. And if B is greater than F4, you would use equation number 2. ठीक है ना? इसमें N is the SPT count, which is N60 actually, and B is the width of footing. KD is another factor which is equal to 1 plus 0.33 D by B. D is the depth of footing. But remember that this 1 plus 0.33 dB value should never be greater than 1.33. It should always be less than or equal to 1.3. So these are the equations that you can use to find allowable bearing capacity for 25 mm or any other settlement, immediate settlement. Let's solve a problem on this. This is the problem. You have been given, चलें इसको सॉल्व करते हैं. Let's solve this problem. सर ये F1 F4 क्या है सर?
ये कुछ फैक्टर्स हैं। ये KD की वैल्यू है और ये जो है F। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज you have a footing, the depth of footing is the depth of footing is कितना है 1.6 मीटर है आई थिंक। डेप्थ ऑफ फुटिंग इज yes 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। और ये और मेजर जोन ऑफ स्ट्रेसिंग जो है ना, दिस, ये मेजर जोन ऑफ स्ट्रेसिंग है फ्रॉम हाफ बी B by 2 to 2B. This is major zone of stressing. You have used an average SPT count in this zone. Yes. N60. N60 is 7. Average, on average, this in this zone, you can consider N60 equal to 7. What is asked is to find out QA for different values of B. What is asked is to find QA for different values of B. You see, there are different values of B, and these are the corresponding QA values. You would only find for B 3 meter. When B is equal to 3 meter, what is the value of QA? Let's find it here. For B is equal to 3 meter. Which equation to use? One equation, what or equation 2? Tell me. Since E is greater than value.
फाइंड हो गया वैल्यू? हेलो, यस सर। क्या वैल्यू आ रही है? वैल्यू फाइंड कर ली आपने? जी, नहीं कॉल ड्रॉप हो गया, मगर आप लिख तो सकते हैं ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि b इज इक्वल टू 5 मीटर लें और क्यू ए की वैल्यू निकालें। एंड रिमेंबर दिस इज फॉर 40 mm, not for 25 mm. That is what I forgot. For QA for 40 mm and B is equal to 5 मीटर। क्या वैल्यू आ रही है निकालें और टाइप करें। हर एक की वैल्यू अलग अलग निकालें। पहले के डी की वैल्यू निकालें। एक मिनट देखें ये काम करें। मुझे पहले आप दें के डी की वैल्यू। अच्छा, b इज इक्वल टू 5 मीटर है। के डी की वैल्यू निकालें, फिर क्यू ए की वैल्यू निकालें फॉर 25 mm, फिर निकालें क्यू ए की वैल्यू फॉर 40 mm। ये करें और जल्दी निकालें और मुझे दें। ये वाले क्वेश्चन यूज करें। जी, सर F3 का क्या वैल्यू है सर? और जरा देखा है सर F3 का क्या वैल्यू है? जी, सर 4.1। आगे जाए ना यार, आगे करें ना। कोई एटम बम का फार्मूला तो मैंने नहीं दिया। 4.1 आ रहा है सर।
बस लिखे ना, जो है वो लिख लें। आगे भी जाए ना, क्यों ए भी निकाले। क्यों ए सर 4.1 आया है सर, KD 1.1 आया है और लिखे, क्यों ए लिखे। 4.1। मैंने आपसे कहा जो है वो लिखें, वो लिखें यहाँ। हमें खाना वो लिखा करना यार, हमें लिखा ना। क्यों ए की वैल्यू लिख लेना। शमरोज, शमरोज, हाँ ना, कुछ लिखे। अच्छा, लिख लिया सर। ना, मिस्टेक, यू हैव डन अ मिस्टेक। जी जी बताएं। एक इक्वेशन में वैल्यू डालनी है, वो निकालना है, आप नहीं निकाल पा रहे। क्यों? इस इक्वेशन में वैल्यू डाले और निकाले वैल्यू, इसमें क्या है? आधा घंटा गुजार दिया आपने इसमें। F2 की क्या वैल्यू है? B 5 मीटर प्लस F3 0.3 डिवाइडेड बाय 5 मीटर, इन सबका होल स्क्वायर जरूरी। केडी की क्या वैल्यू आ रही थी आपके पास? सर ये 0.08 आता है, 7 डिवाइडेड बाय 0.08। हाँ छोड़ो यार, इससे क्या आता है? इससे क्या वैल्यू आ रही है? अगर आप इसको 40 mm के लिए करें, 40 mm के लिए, तो ये आ जाएगा 40 इंटू डिवाइड बाय 25, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 173.9 kPa। अब बताएं 173.9 आ रही है? कोई कहता है 4 आ रही है, कोई कहता है 1 आ रही है। सिंपल कैलकुलेशन है भाई, देखें 3.871 शमरोज दा 3.871 दिसिंगा राव अमीरली दा 4.1 कम जिना राव शमरोज बैटिक को 108 को ब्याम गलत को। सर जी मुंगा पेबल डिवाइड करो सर, द F3 या 4 हो द 0.08 नो दा करे 4 करो। हाँ हाँ, mana pada dia योग तो पाते हैं
अच्छा जी, अब आते हैं इसके लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ। सॉरी, अब देखें ये वैल्यूज यू हैव फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ बी यू फाउंड द QA values and you plotted them here. This is the plot. Let me explain this for you. It is interesting to explain this graph for you. मोबाइल में 270 चले, जो भी आ रहा है बड़ी बात नहीं है. There is no science there. Just plug in the ready-made value and you will obtain it. Okay, no problem. अच्छा जी, once you plotted them, the x-axis is B and the y-axis is allowable bearing capacity for 40 mm settlement, right? So every point on this graph give you a QA and B value which would ensure 25 mm of settlement. ये जरूरी बात है, आप लिखें. Every point on this curve give you a QA and corresponding B value which ensures a settlement of 40 mm. ठीक है ना? This is QA. अच्छा, अब interesting thing is this: as the B increases, the allowable pressure or the pressure that is required to cause a 40 mm settlement decreases. Do you have any explanation for this? Why the pressure that would cause 40 mm settlement decreases with the width of the footing? Do you have any explanation to this? जी, okay, you have two foundations. One is of large size and one is of small size, and both have same pressure. For example, 100 kP. This is 100 kPa, right? And this is 100. You know the significant depth. How deep is the significant depth? Can anybody say? Can anybody tell me how much is the significant depth of the foundation? Assuming this to be a square foundation. G.
बताएं ना। अभी आपने में टर्म भी किया है, पढ़ा भी होगा। सर 5b के मुझे बताएं। 5b के बराबर जी 5b जी 5p के बराबर होगी सर डेप्थ। फाइव पी क्या होता है? सर बी जो इसकी रेट थे। बी यस टू बी बेटा, टू बी सही। significant depth is 2b. And how much would be the stress here? The 2b of this large foundation is large, right? How much is the pressure intensity of this pressure bulb and of this pressure bulb? जी कोई बता सकता है? जी ये किसके बराबर हुआ? कितना किसके बराबर? 10 kPa के बराबर हुआ। कितना? 10 kPa और ये भी 10 kPa. Now you can imagine the 10 kPa. This soil is stressed by 10 kPa. This soil is stressed by 10 kPa. You can imagine how deep the stresses have been penetrated of the same intensity stresses, how deep they have been penetrated in a foundation which has a larger width. So which foundation do you think would settle more? Which foundation you think settle more? Definitely this foundation would settle more. This would settle more because there are more layers. There is a big thick layer that has come under the same stress change. So delta here would be more. So if I want that the delta or the settlement of the both of the foundation remain same, what should I do? जी कोई बताए? अगर मैं चाहूं कि दोनों की सेटलमेंट सेम आ जाए, फॉर एग्जांपल 40 mm हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा? कैसे प्रेशर चेंज करूंगा? बताएं ना। किसका प्रेशर चेंज कर रहा ना? कोई और बताए? जी यार मैं कोई दूसरी जुबान तो नहीं बोला, बिल्कुल मेरी बात आप ऐसे लग रही है जैसे मैं कोई और जुबान बोल रहा हूं। मैं तो बड़ा क्लियरली एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है ना? तो आप मुझे भी आंसर दें। इस प्रेशर को हमें रिड्यूस करना होगा। ये प्रेशर हम रिड्यूस करेंगे तो जब ये और ये सेटलमेंट आपस में बराबर हो जाएंगी, ये और ये सेटलमेंट आपस में बराबर हो जाएंगी। सो इसका मतलब है फॉर द सेम सेटलमेंट, राइट, you have to reduce the intensity for bigger foundation, and so is happening. Look, for greater B, the stresses are being reduced, right, to have the same 40 mm settlement. Remember that this curve belongs to settlement criteria. But if I ask you to plot on the same, the Tarzai bearing capacity or Mehrab bearing capacity equation, so you remember that it has three terms. Bearing capacity has three terms. So if I plot them, the third term is
includes B, 1 over 2 gamma B. So it means that as the B increases, the QA would increase. So if I plot them, it would be like this. Oh my God. Like this. As the B increases, QA increases. Can anybody tell me what is this y ordinate equal to? जी, ये किसके बराबर होगा? ये y ऑर्डिनेट। जी बताए ना यार, तरजाई मेहराब बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन है, x एक्सिस पे b है और y एक्सिस पे q है, तो किसके बराबर होगा? यार आप फर्स्ट सेमेस्टर से डायरेक्ट यहां पे बैठ गए हैं, 6th सेमेस्टर में। क्या खबर है यार? ये बताइए किसके बराबर है? यार ये क्या कर रहे हैं आप? QA is equal to CNC S अच्छा, अब बताएं ये y ऑर्डिनेट में b की क्या वैल्यू होगी? y ऑर्डिनेट मालूम करने के लिए b की क्या वैल्यू होगी? जी बताएं यार, y ऑर्डिनेट जिसमें b 0 होगी ना, जब आप y ऑर्डिनेट मालूम करें तो b की क्या वैल्यू होगी? 0 होगी सर। यार दाता से तो बिल्कुल से गुमसुमी जे जेम के चता नॉन इंजीनियर से रजा लग गया मैं। अब बताएं QA की क्या वैल्यू होगी फॉर b इज इक्वल टू 0? CNC SC प्लस R, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तो 0 हो जाएगा। थर्ड टर्म 0 हो जाएगा। और अगर इसको नेट की फॉर्म में पेश करें तो ये माइनस गैमा इंटू डी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस गैमा इंटू डी, ये आ जाएगा। ये वाई ऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं इसकी क्या ये इसकी क्या वैल्यू होगी? उप्स, ये इसकी क्या वैल्यू होगी? ये किसके बराबर है? ये ऑर्डिनेट किसके बराबर है? जी ये तो सेकंड थर्ड टर्म। ये ऑर्डिनेट किसके बराबर है?
बताए ना यार, एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्या कर रहे हैं? QNet. जी अड़ा यार खुदे तो गोरा द्रेवाणाची वजेशी फर्स्ट सेकंड और थर्ड नो बेरिंग कैपेसिटी QA ते जोड़िंदा थर्ड टर्म शो कया फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म ऑल गेट बिकम QA, ये सारा जमा करें तो QA हो जाएगा। ये Q अल्टीमेट है, ये Q अल्टीमेट है, Q अल्टीमेट इन टर्म्स ऑफ नेट। अगर इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे डिवाइड करें तो ये आपके पास Q सेफ आ जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन तर्जाही से आ गई। अच्छा, अगर आपको अभी बेरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो आपको पता है कि बेरिंग कैपेसिटी किसके बराबर होती है? जी, बेरिंग कैपेसिटी, अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी किसके बराबर होती है बताएं? बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर आपका जो है वो अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी पे था, तो ये किसके बराबर होगी? अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी किसके बराबर होती है यार? अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है सर? Q अल्टीमेट मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नहीं सर, मिनिमम ऑफ क्यों अलाउबल क्या होती है? क्यों अलाउबल? ये ऐसा है जैसे मैं आपसे आपका नाम पूछूं, आपका नाम क्या है? इतना आगे चले गए आपको सारी क्लास को क्यों अलाउबल का पता नहीं है क्या होता है, तो हम कैसे आगे जाएंगे? चलो बस शुरू से लेक्चर शुरू कर लेते हैं, बिल्कुल शुरू से लेक्चर शुरू कर लेते हैं, दोबारा आते हैं इस पे। मगर यहां पे पहुंच के दोबारा अगर मैं QA पूछूं फिर आपको ना तो फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा और ये सिलसिला चलते ही रहेगा। या क्यों अलाउबल? हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं जो टेक्निकल डिजाइन में, किसी को पता है वो दो क्राइटेरिया क्या हैं? स्ट्रेंथ और सेटलमेंट। शेयर फेलियर क्राइटेरिया है और सेटलमेंट क्राइटेरिया है। तो ये सेटलमेंट क्राइटेरिया हो गया, ये सेटलमेंट क्राइटेरिया हो गया और ये हो गया शेयर। तो क्यों अलाउबल क्या होता है? वो दैट इज मिनिमम प्रेशर दैट विल नॉट कॉज शेयर, मैक्सिमम प्रेशर दैट इज मिनिमम ऑफ द सेटलमेंट क्राइटेरिया एंड शेयर क्राइटेरिया, मिनिमम। ठीक है ना? तो देखें ये शेयर, ये कर्व जो है दैट इज Q ultimate in terms of net divided by factor of safety, और ये जो है ना सेटलमेंट क्राइटेरिया का है। इन दोनों में जो मिनिमम आता है, इन दोनों में जो मिनिमम होता है दैट इज Q अलाउबल। इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो Q अलाउबल होगा। अब बताएं इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? इन दोनों में मिनिमम कौन सा है जी? नहीं, यस, ये जो है ये शेयर है। देखें यहां पे शेयर मिनिमम आ रहा है, यहां पे सेटलमेंट मिनिमम आ रही है। ये आपका ये ब्लू लाइन है, ये Q अलाउबल है। यहां से यहां तक क्या गवर्न कर रहा है जी? क्या गवर्न कर रहा है? शेयर। और यहां से यहां तक क्या गवर्न कर रहा है? सेटलमेंट। अगर आपकी भी
अगर आपकी फाउंडेशन की भी यहाँ पे हो, ठीक है ना, तो आपकी बेरिंग की वजह ये है, और अगर आपकी बी यहाँ पे है तो आपकी बी ये है, क्योंकि अगर ये वाली बी इस्तेमाल करेंगे तो शेयर फेलियर हो जाएगा, और अगर इसमें आप ये वाली बी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, तो आपके पास सेटलमेंट शेयर तो नहीं होगा, क्योंकि तो बिल्कुल शेयर पे है, मगर आपकी सेटलमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, बस इतना काफी है इस पे। यार आप कुछ पढ़ें, ये क्या है, ये तो बुरी बात है। आपको क्यों अलाबल का भी पता नहीं है कि क्यों अलाबल किसे कहते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आप खुद करें, 5-10 मिनट में आपको देता हूं। इसमें ये खुद स्टार्ट करें और करें, बिस्मिल्लाह करें, पढ़ें। 5-10 मिनट आपको देता हूं, इसको करें। आप बल ऑप्शन नो आपको
अच्छा जनाब, क्या सॉल्व हो गया है? कुछ किया है आपने? किसी ने कुछ किया है? जी, किसी ने कुछ किया है? कुछ सॉल्व किया है? कुछ थॉट्स हैं आपकी किस तरह सॉल्व करना है इसको? अगर सॉल्व भी नहीं किया तो कुछ थॉट्स तो बता देना कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। Singa milagi. Itu awal kita dah purna awal. जी, फातिमा खातून आप बताएं क्या किया है? फातिमा, फातिमा, जी, कोई बताए ना यार कि आप यहाँ मौजूद भी हैं कि मौजूद नहीं हैं। अगर मौजूद हैं तो आगे चले जाएं, अगर मौजूद नहीं है तो कोई तो आवाज दे ना। पता ही नहीं लगेगा तो लॉगिन जो तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सो मुदस्सिर अहमद खान। यस सर। यार आप ये लोग मौजूद है कि नहीं मौजूद? मैं आप तो बिल्कुल डमीज मेरे सामने बैठे। सर मौजूद है लेकिन सर, हाँ सर अभी कर रहे देखते सर मौजूद है सारे। अच्छा सारे मौजूद हैं तो ऐसे गुमसुम है जैसे मैंने कोई पीएचडी का प्रॉब्लम है आपके सामने रख दिया हो। सर बस वैसे सर अभी नींद से उठे होंगे तो बोलने का मूड नहीं है उनका। अच्छा नींद से उठे हो, चलिए फिर क्या करें। अच्छा इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। पहले देखिए ये विद डेप्थ जो है ना आपके पास एसपीटी ब्लोज आ रही है, आपके पास लोड है, आपको विथ मालूम करना है। विथ ऑफ द फुटिंग यू नीड टू नो
ऐसी विड्थ मालूम करनी है जो कि आपको 25 mm की सेटलमेंट दे। और ये देखिए मुख्तलिफ डेस्क पे ये SPT की वैल्यूज हैं, N60 करेक्टेड वैल्यूज हैं। तो मेजर जोन ऑफ स्ट्रेसिंग आप 10 मीटर ले लें कि आप ये एज्यूम करें कि मेरा फाउंडेशन जो है ना वो 2B ये 10 मीटर तक आएगा। तो 10 मीटर तक जितने SPT वैल्यूज हैं उसको एवरेज करके आपके पास 10 आ जाता है। इसके बाद दिस इज लोड इन kg, you convert this to kilonewton. This is 1000 kilonewton is the load that is applied, that is going to be applied on the foundation. And foundation width has to be designed such that it settles by 25 mm. So what we should do, you take different values of B like 2 meter, find the KD values, find the Q net from the equation and probably from equation number 2 of the SPT. Now multiply this with the area of the foundation, which is 4, 2 by 2, 4. This is the load that it could take. And you see this load is less than the applied load, so you have to increase the weight. Increase the weight to 2.25. Again find QA, multiply with the area, it is 991. You still need to increase the width a bit more, that is 2.3 meter. KD, QNet, and now you landed onto this value 1026.8, which is greater than 1000 kilonewton. So this is the width, 2.3 meter, that would take up that 1000 kilonewton load, and the settlement would be limited to 25 mm. Now let's come to the last problem of this class. It is this. Let me snipe it for you. I don't know how to get rid of this ribbon. अच्छा, snipe. Now let me solve this problem for you. Last problem of this lecture. This is a soil profile from a geotechnical investigation. It has different layers, first clay and then sand and gravels. And what you have is the SPT counts, right? What is asked in the problem? To find the allowable bearing capacity of the foundation such that factor of safety is 3 against shear failure and settlement is not more than 50 mm. This is not meter, this is mm, 50 mm. So both criteria of shear and settlement has been combined into this problem to clarify to you the applicability of the concept. So let's first come to the shear problem, shear criteria. Shear criteria. Shear width of the footing is given to the, this is the base of the footing, this, at 1.5 meter, at 1.5. Okay. So you see, there is a failure wedge in Tarzahi or Mehrhouse bearing capacity equation, and this soil where the wedge is contributes to the shear strength of the soil. The depth of this wedge depends upon what? Can anybody tell me? The depth of this wedge depends upon what?
G. This depends upon what? Therefore, it is depend on the width of the footing. We assume that this wedge is within this clay. So we can use the properties of clay to find the bearing capacity, right? And let's use the Razai bearing capacity equation with Merhoff bearing capacity factors. So C is equal to QU by 2. QU क्या है? It is unconfined compressive strength. 300 over 2 is 150 kP. And it is clay, so you assume phi equals to 0. Right? Phi is equal to 0. So these are the properties that you would use. C0, C150 and phi 0. So for phi is equal to 0, NC is equal to 5.14. NQ is equal to 1 and NC is equal to 0. So it means, sorry, N gamma is equal to 0. So it means the third term is 0. The third term of the bearing capacity is 0. You have now QU is equal to CNC SC plus gamma D and Q. The third term is 0, so I don't write it. And in terms of net, you say minus gamma. Okay, and Q safe is equal to QU in terms of net divided by factor of 6. So you get Q safe. This is criteria number 1. Right? Here is the detail. QU is, you see N gamma 0. So this is 1000 kP. QU net is 1000 kP. Factor of safety is 334 kilonewton per meter square. It means that if you apply 334 kPa on the foundation, a net pressure of 334 on the foundation, the pressure, there would be no shear failure of the soil. Now let's come to the settlement criteria. Come to the settlement criteria. Achha. Settlement criteria. Settlement criteria says it is 25 mm settlement, 50 mm settlement. So we would use elastic theory. We would use elastic theory to solve the problem. For elastic theory, you need B, width of the foundation. So let's assume B is 14 meter. B is 14 meter. In elastic theory, the next thing you need is H. What is the value of H? H is, you know, is 5 times B or rock depth, whichever is minimum. Here, rock depth is closer, minimum, so you have to find the rock depth. Rock depth is 29. Rock depth is 29, you see, meter from the ground surface. But from the base of the footing, H is equal to 27.5 meter. Right? Now the next thing is to find modulus of elasticity E. Modulus of elasticity E. So you see,
E of this layer, the equation from correlation is 500 into N55 plus 15. This is the equation. So to apply this equation, you have N70 is equal to 40. First you have to convert N70 into N55. It's very easy. 500 40, which is N70, multiply this with 70 and divide this with 55 plus 15. Let me see the equation. Yes. This will give you E in kPa units. In kPa. So you apply this equation to all the layers of sand or gravelly layers and you find E. Similarly, you find E here, you find E here, and you find E here from correlation. This is E1, this is 2, this is 3, this is 4. Then you find average, rather weighted average. E1 into, this is H1, this is H2, this is H3, and this is H4. H1. Similarly, go on and divide this by total height H. So you get E average. ठीक है ना? Next thing that you would find, the equation now for settlement is QA, no, delta H is equal to Q naught B prime 1 minus mu square over ES N into I. Okay. क्यों ना? ओके, अब मुझे बताएं बी प्राइम की क्या वैल्यू होगी इफ यू आर गोइंग टू फाइंड सेटलमेंट अंडर द सेंटर ऑफ फुटिंग. बी प्राइम इज इक्वल टू बी बाई 2. ES you have found, mu is 0.3, assume it 0.3. What is the value of M? Because there are 4 corners contributing to the settlement, so M is 4. I you take from the table. From the table. So all values are known except this. So can anybody tell me what we have to do with it? Can anybody tell me what we have to do with it? जी जी, can anybody tell me what should I do now? यार कोई तो बताए ना, सब कुछ मैंने मालूम किया है, आप मुझे कोई थॉट तो बताए ना जी. क्या करेंगे, क्या हम फाइंड करेंगे? क्यू नॉट, और ये इसकी क्या वैल्यू देंगे? ये जो रिक्वायर्ड है 50 mm इसके लिए, और ये क्यू ए हम निकाल लेंगे, ठीक है ना. तो हमारे पास इससे जो एक वैल्यू आएगी वो आ रही है 204. इससे जो वैल्यू आ रही है वो है 204 kPa. तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं. एक शेयर से आई है,
और एक हमारे पास शेयर से आई है, वो है क्यू सेफ, क्यू सेफ, वो है 304 kPa इन टर्म्स ऑफ नेट। और दूसरा हमारे पास सेटलमेंट से आई है फॉर 50 mm सेटलमेंट, उसकी वैल्यू आई है 204 kPa। दिस इज आल्सो नेट प्रेशर। सो minimum of these two is the allowable bearing capacity. The minimum of these two is this. So this is our allowable bearing pressure. If you apply this pressure, right, the settlement will be 50 mm and there will be no shear failure. The factor of safety would be equal to, if you apply 204 kPa of pressure, can anybody tell me what would be the factor of safety against shear failure? Can anybody say what would be the factor of safety against shear failure? जी 3. जी 3 होगा सर। जी 3 नहीं है, गलत है। आपके पास Q ultimate in terms of net was 1000 kPa और Q applied जो आपका है अभी 204 है, ये applied है, तो factor of safety would be 1000 over 204, ये हो। अच्छा जी, चलें अब मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं सारी क्लास से कि प्लीज आप पढ़ के आए, ठीक है ना, फ्रेश हो के आए। जो रिस्पांस आज मुझे मिला है आप लोगों से वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि किसी को अलाउबल